everyone, and welcome back to the Level Up Queens podcast, the High Value Women podcast where we journey together towards self discovery and empowerment. I am Purnima and I'm thrilled to embark you on this journey. In today's episode, we are going to talk about something वो बहुत ही अच्छा वाला feeling रहता है, that is love. Yes, we are going to talk about love in this episode. और we are having so many things, so many concepts about love. तो हम ना कभी कभी भूल जाते हैं कि ये प्यार नहीं है. Like there are lots of things, lots of misleading things that we think is love, but actually it's not. So let's get started. We all want love. और ना ज्यादा कर जो हम सोचते हैं प्यार है वो मूवीज और बुक्स और ऐसे किसी मीडियम से हमने कंज्यूम किया हुआ है, बट नॉट नेसेसरी कि जो हम सोचते हैं, नहीं तो जो हमारा व्यू है प्यार के बारे में, दैट एक्चुअली इज लव. जब हमें ऐसा कोई मिल जाता है जिसके साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान को सब कुछ दे देना चाहिए. पर अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं कि प्यार है, एक्चुअली प्यार नहीं है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉक्सिक बिहेवियर्स वी थिंक इज लव, बट एक्चुअली इट्स नॉट. अब बहुत बार हम सोचते हैं कि ऐसे तो प्यार में होता ही है, पॉजेसिवनेस तो होता ही है ना, बिकॉज दैट पर्सन लव्स मी. भाई नहीं होता. जेलेसी तो होती ही है ना कि मैं किसी के और के साथ कैसे बात करूं, क्योंकि मेरा तो कमिटमेंट उसके साथ है, तो उसको तो हर्ट होगा ही ना. क्या हुआ, उसने मुझे पनिश किया, मैं डिजर्व करती थी. भाई ऐसे प्यार नहीं होता. हमने बचपन में पढ़ा था एनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स. सो लव के अपोजिट में हेट आता है, तो कोई आपको हेट्रेड देके कैसे बोल सकता है कि वो प्यार है? दोनों तो अपोजिट में आते हैं ना. तो लाइक सॉफ्ट एंड हार्ड. इन द सेम वे प्यार में नहीं ऐसे होता कि आप बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हो and you punish that person. That's not love, honey. Whenever we talk about love, we just put it in a way कि it's a romantic love. But like any form of love, किसी भी इंसान के साथ रहने के बाद we should be feeling good about ourselves. नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि you were feeling so good about you and then you went and then you talked with this person and now you're feeling so drained, or now you are just questioning your own worth. तो वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट लव. देन आप ही बताओ वो प्यार कैसे होगा? सोसाइटी हैज रोमांटिसाइज्ड वेरी टॉक्सिक साइड ऑफ लव, लाइक वो मेरी है, मैं उसे पाके रहूंगा. और ऐसा होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ, और मैं अगर कुछ रहेगा ना तो मैं फ्रेंड्स के साथ इस डिबेट में भी लग जाती हूँ इन मूवीज, कि वो प्यार करता है, then he loves that girl and that girl does says like she's clear that कि भाई मेरे से ना है. और फिर वो उसके लिए बहुत सारी क्रेजी चीजें करता है, एंड आई एम लाइक मेक सेंस राइट, या. एंड स्टिल शी इज लाइक कि भाई मेरे से ना है. देन ही गेट्स वेरी एंग्री अबाउट इट, बिकॉज वो सोचता है कि ऐसे कैसे कर सकती है वो मेरे साथ. एक जगह पे जो प्यार था उसके लिए, वो अभी बहुत ही ज्यादा एंगर में बदल जाता है, और वो उससे एक लेसन सिखाने के पीछे लग जाता है. बट ये किस काम का प्यार है? यू टेल मी. ऐसा कैसा कौन सा प्यार है? प्यार तो ऐसा होना चाहिए ना, भाई तू मेरे साथ खुश है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी ना, सो इफ यू वॉन्ट टू लीव यू लीव. फिर वो लोग रील बनाते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता. और ज्यादातर हमारी इमेज व्हाट लव इज कम्स फ्रॉम मूवीज, बुक्स, और जो हमारी प्रीवियस जनरेशंस थी, ओल्डर जनरेशंस, उनसे आता है. बट उस टाइम पे साइकोलॉजी नहीं तो साइंस वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड कि हमें बहुत सारी डीप लेवल पे चीजें पता चले. पर अभी भी हम वो मूवीज देखते हैं एंड लाइक वी थिंक कि प्यार तो ऐसे होता है, यू सी अ पर्सन एंड देन लाइक full to love. But actual fact basis, because emotions can lie, facts don't. So a woman takes approx 3 months to fall in love and a guy takes like approx 1 month to fall in love. तो अगर इससे पहले आपको आपके कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को तेरे से बहुत ज्यादा प्यार है, आई फील इट्स अ रेड फ्लैग. बिकॉज हम ना बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि व्हाट इज लव एंड व्हाट इज जस्ट लाइकिंग. वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट लिटिल बिट जेलसी इज फाइन. अगर इस इंसान को आपसे प्यार है तो वो लिटिल बिट जेलस होगा ना, आप अगर किसी और के साथ बात कर रहे हो. रिलेशनशिप्स इन जनरल आर मेंट टू heal us and not harm us and hurt us. So in today's episode I would be sharing 5
myths about love which are unhealthy. So the first myth is jealousy means they love me. Oh, my guy is little possessive, yeah, because he likes me so much. He do not like when I talk with someone else because he loves me so much. Nahi, nahi, nahi. Trust is a very important factor in a relationship. You are in relationship and if your guy does not trust you enough, you could be true with him and उसे हमेशा ऐसे आपको बताना पड़ता है, नहीं तो जताना पड़ता है और किसी के साथ बात नहीं करना पड़ता, then it's like honey, that guy is not for you, that guy is not a right guy. Have you heard this thing? If they get jealous, that means they really love you. Let me ask you, since when love started to be controlling? A partner who is constantly asking that where you're going, what you're doing, what you're wearing is not protective but possessive. Love should make you feel free, not trapped. I really believe that love has to be. You are so free, it gives you wings, and it's like you go, you want to travel, you want to go achieve your dreams. This person will support you. Yeah, that's what we get into a relationship for. So we can have someone with whom we can share our journey of our life and help each other to get better and better and achieve whatever the purpose we are here for. So this person would not stop you from dreams but will help you with your dreams. And I believe that's how love should be. Like, it should give you wings. And the beauty of love is, even when you have the wings, you still, like, you can go anywhere in this world, and you do go anywhere in this world, but you still come back to this person. I believe that's what true love is. Love is not a need. मतलब इसके बिना मैं रह नहीं सकती, नहीं तो मैं रह नहीं सकती, इसीलिए मुझे ये इंसान चाहिए। भाई, ऐसे तो सेल्फिशनेस हो गया ना कि मुझे कौन सी तो चीज चाहिए बिकॉज उसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती. लव हैज टू बी इन अ वे कि इट्स अ वांट, इट्स अ चॉइस. यू चूज टू बी विद दिस पर्सन. आई एम वेरी मच ग्रेट ऑन माई ओन. I can go anywhere I want, I can do anything I want, but still I choose to be with this other human being. ये तो वो कसमें वादे करके possessive होना, मतलब उसमें क्या ही मजा है. If your partner gets jealous for little things, वो बोलते हैं कि they love you, that's why they are getting jealous. It's a form of love. But honey, that's not passion, but it's the insecurity of losing you. They want to control you. They don't want you to be better than them. They are in some sort of a race with you, which is very toxic. And over time, this jealousy is going to turn into control. From where you are going will turn to why did you go, and then you shouldn't go. So let's cancel out the first myth. Jealousy is not common in love. The second myth is love is about sacrificing everything. Yes, relationships do require efforts and compromises. There is a difference between healthy compromises and losing yourself. If you find yourself giving up your friendships, your relationships with everyone else just to be with this person, I feel it's quite toxic. Honey, a relationship should not make you shrink. It should be making you expand. You should not be making a choice between love and your own well-being. Real love supports you in your wants and needs. That relationship will not sustain if you are giving yourself up, because after a certain point you will want to be yourself back, and then it would be very tragic and lots of waste of time. The second myth, love is sacrificing everything. I don't think so. It stands any ground. The third myth is fighting means we care. हाँ, हम झगड़ते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंक के मारते हैं, और या यही प्यार होता है? नहीं भाई, ऐसा प्यार नहीं होता. ये एग्रेशन होता है. This is violence, which is so opposite to love. तो ये प्यार नहीं होता कि एक दूसरे को कुछ भी बोल दो. एंड ऐसे ऐसे होता है कि मैं बोल गया, हम ऐसा ही हो. There is lots of screaming going on and people think कि अरे ये तो नॉर्मल है ना कि अगर झगड़ा हुआ तो ऐसे ही होता है. और मुझे भी ऐसे लगता था कि बहुत टाइम तक कि मतलब झगड़ा तो होता ही ना, किसी भी रिलेशनशिप में झगड़ा होता ही है. आई वॉज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, आई गेस पॉडकास्ट और इन व्लॉग ऑफ टैमकॉर, एंड उसने बोला कि वो दूसरे घर में शिफ्ट हुई थी. शी शिफ्टेड विद हर बॉयफ्रेंड. तो उसने बोला कि अरे एक महीना हो गया कुछ तो, एंड वी डिड नॉट फाइट और वी डिड नॉट रेज वॉइसेस एंड इट्स गोइंग गुड. एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है ना, बिकॉज वी हैड बीन सीइंग शाउटिंग, गेटिंग एंग्री, आर्ग्यूइंग. इट्स ओके, इट्स ऑल नॉर्मल. बट जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ और सीख रही हूँ, आई कैन सी दैट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ पर्सन अबाउट अ सर्टेन थिंग, तो यू हैव टू टॉक. अगर मुझे आपके बारे में एक छोटी सी चीज अच्छी नहीं लगी, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ग्रजेस, बिकॉज ग्रजेस होल्ड करने के बाद बहुत बार ये एंगर एक वोल्केनो में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट blasts.
But in a healthy relationship, you should understand कि you have to have a habit of conversation. Even the conversations can be difficult at times, but make sure that you have conversations. When you will be having conversations, you will start to know कि सामने वाले का इसके ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है. बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ऐसे लगता है कि इसने जानबूझ के ऐसे किया, सामने वाले इंसान को पता भी नहीं रहता. They hurt you. So it's very important to have conversation. You can write letters to each other, or you can have talks, or whenever you be together you can discuss few things. Yeah, just talk out. And आपको ऐसे लगता है कि चैटिंग में कभी कभी ऐसे होता है ना कि we don't want to be aggressive, but ऐसे लगता है सामने वाले को this person is being cold. So the conversations which are little can go wrong, try to have it face to face so you can see the expressions of the person as well. So fighting or blaming each other is not love. Just because we see it around and think it's normal doesn't make it right. After all, love or any relationship should be giving you peace. That doesn't mean ki you wouldn't be developing in your life. No, there are going to be hard times, but at the end it should not make you feel as if you are nothing. Even if you're nothing, it should be seeing potential in you to be everything that you want to be. And yes, I totally agree that disagreements happens. It should happen because अगर नहीं होगा then you are a puppet in someone else's hand, which you shouldn't be. At some points I will agree with this person and some points I would disagree. And that doesn't mean कि भाई disagreement हो गया तो like we do not love each other anymore. नहीं तो इसने मेरे मेरे point of view को नाक कैसे बोला नहीं. But we have to understand कि उसका क्या perspective है इस पे. I really like this word, that is Cold War. I studied it in my history, so I use this. And having Cold War, like not saying anything but having that passive aggression, is also not good. Whatever it is, it's very important to just clear it out. Just talk it out. Let it go. Let it be out. Even this person would stay after this, or they won't. And if they think like you're making such a big deal of a small issue, like क्या हुआ मैंने बोल दिया तो उसमें क्या बड़ी बात है, तो भाई this person does not care for you. अगर उसे नहीं मालूम करना कि ये चीज ने आपको हर्ट किया है and does not have that much humility to talk out this thing, so it's clear sign कि they are not interested in improving the relationship you have with them. So why are you so much interested? Fourth myth is they hurt you because that's the way they are. मतलब वो वैसे ही है. But let me tell you honey कि love is a choice. The words we choose, it's a choice we make. Every point, every single thing in our life, किसी के साथ कुछ बुरा हो सकता है but still that person has a choice to look at the positive or look at the negative. हर एक इंसान के पास चॉइस रहती है. कोई इंसान कुछ बुरी चीजें बोल देता है और बाद में when you go and ask why did you do this, they would be मैं ऐसा ही हूँ. And if someone be so rigid, if there is no flexibility to grow, even if you being with that person, after a certain point you will drain yourself out and you will feel broken. They have made it clear कि this is how they are. You want it, take it. Don't want it, don't take it. But you being in a relationship with this person would be affecting you and your future tremendously. Someone's behavior is hurting you, it matters. And if someone wants you in their life, it should matter to them as well, and they should be wanting to have a conversation. उनको आपका जीवन आसान बनाना है ना. That's what love means, making each other's life better and more comfortable, peaceful. And the fifth myth is if they love you then they will know what you want. वो अलग इंसान है, उसे नहीं पता चलेगा जब तक आप नहीं बोलते. Even the best partner in this world cannot figure out each and everything about you. You just talk about whatever your needs and wants are from a relationship. अभी तो मैंने आपको बता दी 5 चीजें जो unhealthy है. Just a quick recap. Jealousy does not mean they love you. Love is about sacrificing everything. नहीं भाई ऐसा नहीं होता. Fighting means that they care. They are hurting you because that's the way they are. And lastly, if they love you, they will know what you want. So these are the things we have to get ourselves separated from. But we are all queens and we level up. So now as we know ki what we should stay away from or is wrong, it's my responsibility to share what is right. So firstly, setting boundaries for yourself and for the other person, because अगर relationship में ऐसे हो रहा है कि किसी चीज पे आपको खुद कौन हो वो छोड़ना पड़ रहा है पूरी तरह से और आपको ना बोलना नहीं आता. मैं इस इंसान को ना कैसे बोलूँ कि इसने ये प्लान किया और अभी मैं मुझे ये इवेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और माई करियर. तो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज कि अरे आपको ना बोलना है तो अच्छी तरीके से आप ना बोल सकते हो.
तो यू कैन यूज अ सैंडविच मेथड कि आप स्टार्टिंग में अगर किसी ने आपको बोला कि दिस इज द थिंग एंड विल यू बी इंटरेस्टेड टू कम एंड you are not able to, then you can let that person know कि I really love coming with you, but actually I have this thing, that's why I won't be able to make it. So it would be positive, negative, positive, like a sandwich: bread, vegetables, veggies, and then a bread again. But you keep on saying yes, 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 which does not work for you or in a long term for the relationship. It's two people coming to you. Losing your own self will help no one and not at all your relationship. This is a sandwich method. You can use it for setting boundaries or saying no, not just in a romantic relationship but any other form of relationship as well. Second practical step is talk openly as much as you want. If you feel कि अरे this does not fit और ये मुझे अच्छा नहीं लगा, then let that person know कि मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी. Third practical step is prioritize emotional safety. You should be feeling safe when you are with this person. You should not be having that roller coaster ride और आपको ऐसे डर डर में आप जी रहे हो. That is not right for you or your body. So it's very important for you and the person to create a safer place for each other to express yourself and feel secure. The fourth practical step is don't mistake intensifying as love. The roller coaster ride, the constant anxiousness which we think are butterflies, make sure to choose a peaceful form of love other than this roller coaster rides, because it's not healthy for you and your future. And the fifth practical step is choose a partner who values you, who respects you, who wants to be with you, who wants to take care of you, who wants to do things for you and wants to make you happy. So with this, I hope you enjoyed this episode. मैंने हिंदी में बात किया because हिंदी आ ही जाता है. I hope so you enjoyed this podcast episode and आपको अगर अच्छा लगा तो please like कर दीजिए, subscribe कर दीजिए if you're watching it on YouTube, और please 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 मुझे rating दीजिए if you're watching it on Spotify or Apple Podcasts. It would be helping me to reach out more people who are into similar sort of mindset or want to level up in their life. Please remember, you're worthy, you're capable, and you have the power to create the life you desire. Until next time, keep leveling up. Mwah. Bye.